Hello everyone, good afternoon and welcome to the session all of you. Hope I'm clearly audible and the video is properly live. So welcome to CAT 2023 Zero to Zenith series. These sessions belong to that batch and previously I have done 4 sessions so far on ratio and its applications. So 3 sessions on that and the previous session was on direct and inverse variation. Today's session will take a very interesting topic, that is average and allegation. Now allegation, let us not look at it as a separate topic, but let's look at it as a technique that we can use to solve average questions. And tomorrow we have another session on mixtures and allegations. So how do we solve questions on mixtures using the allegation technique? Today we'll take up the questions of average and try and apply allegation to the questions. So that is like more or less the plan. And then after mixtures it will be followed up by removal replacement. So that is the full module of this: average, then mixtures, then removal replacement. Excuse me. So this module allegation has extensive use, but not just on average and mixtures. Allegation is one chapter where you can apply it in percentage, ratio, time, speed, distance, time and work. Everywhere it can be applied. SICI, profit loss. I'll take up questions today and I'll explain how it is applied. So if you're new to the channel and you are watching this video for the first time, do subscribe to the Unacademy CAT-alyst channel and do like the session and share it with the friends who are also preparing for the CAT exam. So let us begin. This is a brief background of mine. You can get all these details in the profile section. The link of my profile is given in the description of the video. So you can join me for my special classes on the Unacademy platform also. So 11 p.m. every day. You can join me for my special classes, QA and LRDA ka. Okay, every day 11 p.m. on the Unacademy platform. You can use the app or website, but Unacademy platform में every day रात को 11 बजे special class रहते हैं. Now special classes are free classes, so all of you can attend the free classes. So 11 p.m. को every day, be it quants or LRDI, that's a special class, and you can unlock all my special class for free using this code. Okay, all special classes you can attend for free upon using this code. So you can get my profile link in the description, and if you have not registered on the Unacademy platform, registration free is, just sign up and then start attending special classes for free, and then subscription will be followed by that. If you want to take a subscription and attend courses, then you can take the subscription, else free classes to attend kar hi sakte ho. Now this is an offer, festival offer चल रहा है, 25% off on 12 months and above का plus and iconic subscription पे. This is valid till 12th till 18th of January. Last date is 18th of January. So if you're trying to take a subscription, do use my code and you can avail a 25% discount at this point. Before 18 January, बढ़िया chance है, 25% discount मिल रहा है, ले सकते हो. Very happy to share the Unacademy 2022 results this time. 75 plus 99 percentiles and 110 plus 98 percentiles. Next announcement is for the Unacademy scholarship test. January 15 को अभी एक scholarship test खत्म हुआ है. Next scholarship test on January 29th. So if you want, you can also attend the scholarship test, and based on your ranks, you will get discounts on your subscription. So rank 1 to 5 पूरा 100% discount हो जाएगा. Rank 6 to 25 50% तक discount हो सकता है. So normally if you don't give the test, अभी के लिए offer है 25%. After that it will come down to 10%. But if you are giving the scholarship test and you're doing well, you can get all this discount. Top 100 में रहोगे तो minimum 20% discount तो मिलेगा ही. ठीक है. So this is the last announcement before we begin. This is my arithmetic course. Okay, that has recently started. Full arithmetic will be covered here. So this course has total 39 sessions plus 3 quizzes. So all concept coverage, full concept coverage and practice. So we'll be covering 1500 plus questions in this, and we have 4 sessions per week. Timings Monday, Wednesday,
फ्राइडे एंड संडे, 4 days a week को रात को होता है 8:30 को क्लास. तो अरिथमेटिक का फुल कवरेज. ओके, बिफोर दिस आई हैड डन अ कोर्स ऑन नंबर्स. ये अरिथमेटिक हो रहा है, देन साइमल्टेनियसली विल गो टू अलजेब्रा एंड ऑल. तो वन आफ्टर द अदर. So if you want to study arithmetic पूरा basic level से till the advanced level from the scratch and cover the entire arithmetic properly, you can join this course if you are taking a subscription. All right. चलो, let us start then. So first let us take a look at the concept of average. What is the meaning of average? Okay, when I say average, all of us understand what average is. All of us will know how to calculate average. But what do you mean by average? का मतलब क्या होता है? And why do you calculate average? Because your questions will come from that part of understanding. Why do you calculate average and what is the purpose of calculating? मतलब क्यों, उसका मतलब क्या है exactly? So let me take a very simple example. Suppose I'll say 14, 18, 19, 27 and 22. These are 5 numbers and I'll say इनका average कितना है निकालो. So all of us do this usually. 14 plus 18 plus 19 plus 27 plus 22 divided by 5. We generally use this, add all the terms divided by the total number of terms. तो तुम जब ऐड करोगे कितना आता है? 14 plus 18 32 and then 19 51 27 78 and plus 22. अरे वाह, 100 आ गया. So average is perfectly 20. This is how we calculate average. So average का formula we can put it in this way. X bar is summation of all xi divided by n. Okay, which we usually call as sum of all terms by total number of terms. कैसे बोलते हैं उसको? Sum of all the terms divided by the total number of terms. Sum of all observations is divided by total number of observations. But this is like how we calculate average. इससे average का पूरा proper meaning, if you have to explain it to someone, and just you have to explain what average is, no need to calculate. So how do you put it? तो ये तो उसका calculation method हो गया. This is how we calculate average. Average का मतलब क्या होता है? So to understand that, let me take even a smaller example. और एक example लेते हैं. Suppose I'll say 7, 8 and 9. इनका usual average, if you calculate it, is 7 plus 8 plus 9 by 3. So I get 24 by 3. So the average is 8. What do you understand by 8? That means instead of writing 7, 8 and 9, I can write 8, 8 and 8, and yet the overall impact is the same. That is the meaning of average. That तुम सारे terms के जगह अगर तुम average को replace कर देते हो, yet the overall effect is same. उसीलिए average निकालते हैं. Suppose a teacher enters into a class and the teacher asks you, what is your average marks? तो what's the average of the class? ऐसा अगर टीचर पूछे तो या तो हर कोई एक एक करके खड़ा होके they can start saying that I have got an 80, someone will say I have got an 85, कोई बोलेगा I got a 95, someone will say I got a 70. So individually they can tell their marks and the teacher can make a mental assessment. Okay, more or less the class is scoring like this. But तुम ऐसा अगर बोलोगे कि the class more or less is scoring 80, the average of the class is 80. What does it tell you about the class? Now you cannot guarantee that individually everyone has got 80, but at least you can say that more or less I can assume everyone has got 80, and that would not be wrong. Overall effect is the same. Maybe someone has got a 90, someone has got a 60, someone has got a 50, someone has got a 100. This all can happen. But even if I assume that everyone has got an 80, yet the overall effect is the same. And what is that overall effect? That overall effect is basically the sum. तो या तो तुम 8 plus 8 plus 8 करो 24, नहीं तो 7 plus 8 plus 9 करो 24. This is the meaning of average.
If I repeat the previous example that we had taken, let's take a look at the previous example जो अभी किए थे 14, 18, 19, 27 and 22. 14, 18, 19, 27 and 22. So instead of writing all this, if I write the average 5 times, still the overall effect is the same. यहाँ पे भी sum is 100. Here also the sum is 100. Okay, so you can replace individual values with the average, keeping the overall effect the same. Okay, so it again another way to term it is average is representative of the entire data. Measure of central tendency बोलते हैं. So it represents the total data. So answering the question why should we calculate average? So sometimes it is difficult to exactly remember individual data points. So average is one of the measures to get a get an idea of what the overall data is all about. Okay, so it's a quantitative analysis of the data. एंड दिस इज व्हाट एवरेज इज. वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज को अगर वहां पे आते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता. वेरी सिंपल प्रोसेस. देयर इज येट अनदर मेथड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एंड दैट इज वेरी क्रूशियल टू नो बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आएगा. So that is called as net surplus or deficit method. That means suppose मैं वही 7, 8, 9 का एग्जांपल लेता हूँ. 7, 8, 9 and the average is 8. So if you look at this 8 and compare it with each of the terms, 7 is at a deficit from the average -1. Average से 1 less. 8 is no surplus, no deficit. Whereas 9 is at a surplus of 1. So this net surplus deficit technique has 2 points. First point is the net surplus or deficit from the average is always 0. Net surplus or deficit from the average is always 0. And if not 0, then follow equal distribution. I'll explain इसका मतलब क्या है, don't worry. If not 0, then you follow equal distribution. तो इसका मतलब क्या है? तो 7, 8, 9 when I'm taking, the average is 8. ठीक है? So and I'm seeing that 8 का मैं अगर compare करूँ with all the 3 terms and I'm taking the surplus and deficit. यहाँ पे deficit -1, surplus +1. Overall net surplus और deficit यहाँ पे कितना हो गया? 0. Hence average is 8. Meaning being, अगर 5 नंबर दिए जाएंगे ऐसे 14, 18, 19, 27 and 22 and I'll ask कि इनका तुम average निकालो. तो one way of doing it is add all the 5 numbers divided by 5 and already हमने वो किया हुआ है. आंसर आएगा 20. But using net surplus deficit technique, what you can do is no need to add. तुम numbers देख के just make an estimate what the average is. थोड़ा एक estimate लगाते हैं. Let us say the average. I'll take मुझे लग रहा है average आएगा 19. I have not calculated. Just looking at the numbers, I estimated a value. I thought average is 19. So if average is 19, then the net surplus deficit from 19 should be 0. वो check करते हैं. So this is -5. This is -1. 0. 19. This is 8. And this is +3. So if you look at this, +8 +3 +11 and -5 -1, it is -6. So I am getting a net surplus basically. So +11 -6, I am getting a net surplus of 5. तो क्योंकि तुम्हारा 0 नहीं आया, सरप्लस डेफिसिट ऐड करके 0 आना चाहिए था. 0 नहीं हुआ, एंड में एक सरप्लस आ रहा है. दैट मीन्स 19 इज नॉट योर एवरेज. तो एवरेज कितना होगा? विल गो टू द सेकंड पॉइंट दैट इफ नॉट 0 देन फॉलो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो भी नेट सरप्लस आया उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन हाउ मेनी टर्म्स हियर? 5 टर्म्स.
तो ईच ऑफ देम गेट्स एडिशनल 1. तो पहले तुमने 19 दिया हुआ था, अभी 1 दोगे तो इट बिकम्स 20. तो 20 इज योर एवरेज. Now you might think what's the purpose of doing this. मतलब इसको तो सीधा सीधा ऐड करके 5 डिवाइड कर लेते हो जाता. करेक्ट, एंड आइडियली यू शुड डू दैट ऑल्सो, बट टू एक्सप्लेन यू दिस टेक्निक आई एम डूइंग इट हियर बिकॉज क्वेश्चंस में ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होगा. तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज, लाइक हाउ एवरेज वर्क्स. लेट मी लुक एट इट अनदर वे. कोई 19 ना लेके तुम अगर बोलोगे मैं 21 ले लेता हूँ, तब देखते हैं डज इट वर्क और नॉट. 21 में दिस इज अ डेफिसिट ऑफ -7, -3, -2, +6 and +1. तो दिस इज +6 +1 +7 सरप्लस है, बट -7 होके ये तो कैंसिल हो गया, ये तीनों +7 -7, एंड ओवरऑल देयर इज अ नेट डेफिसिट. तो नेट डेफिसिट हो गया 5, माइनस मतलब डेफिसिट. तो ये 5 को तुम डिवाइड करो बाय 5, रिजल्ट इज 1. तो 21 -1, एवरेज इज 20. अगर डेफिसिट होगा तो माइनस करना है, सरप्लस होगा तो प्लस करना है. Hope it makes sense, all of you. To understand, I am taking very simple examples. Try and compare this method from this examples first. Then we'll go to questions. एक बार questions पे जाएंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे करना है. Very useful technique this, because all of us understand this. Net surplus deficit तो चलो नया चीज है, but ये वाला जो sum of all terms by total number of terms, we have always used this. तो ऐसा करेंगे भी जब नेसेसरी होगा, तब तो ये करेंगे ही. बट एवरेज तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फाइंड द कैलकुलेट और कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस. द क्वेश्चन वोंट बी लाइक दैट. तो क्वेश्चन में एवरेज का एप्लीकेशन आएगा. तो टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एवरेज वर्क्स. So this is how it works, that the net surplus or deficit from the average is always 0. And अगर 0 नहीं आ रहा है, that means that number is not your average. तो क्या करना है, you have to equally distribute. इसको थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल में इफ आई एम पुटिंग इट, थिंक अबाउट दिस. यू हैव 5 चॉकलेट बैग्स, 5 बैग्स ऑफ चॉकलेट्स तुम्हारे पास है. ईच बैग हैविंग दीज मेनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स, एंड आई गेव यू 5 बैग्स, 14, 18, 19, 27, 22 बोला, इसमें इतने इतने चॉकलेट्स हैं. एंड योर टास्क इज यू कंबाइन ऑल चॉकलेट्स एंड डिवाइड इट इक्वली अमंग 5 स्टूडेंट्स. वो तुम्हारा काम. तो यू कैन डू इट इन बोथ वेज. तुम क्या करोगे, पहला मेथड, यू ओपन अप द बैग्स, पुट ऑल चॉकलेट्स टुगेदर, कैलकुलेट कर लो टोटल कितने चॉकलेट्स हैं, फिर डिवाइड बाय 5 करो, एंड तुम्हें मिला कि 20 चॉकलेट्स. देन यू डिसाइड कि अभी चलो सबको मेरे 20 देने हैं. दिस इज जो फर्स्ट मेथड का मतलब वही है. प्रैक्टिकली अगर सोचोगे, यू ओपन अप ऑल द बैग्स, पुट डाउन ऑल चॉकलेट्स, काउंट कर लो पहले कितना है, 5 में डिवाइड कर लो, you got 20. That means you concluded I'll have to give 20 to each student. So that is one way of doing this. Or the moment you heard the number of chocolates in the bags, you made an estimate that more or less सबको around वही 19-20 मिलेगा मुझे लग रहा है. You didn't calculate, you just made an estimate. So you started giving everyone 19 chocolates. तो सबको 19 चॉकलेट देने के बाद यहाँ पे जो नेट सरप्लस रह रहा है उसका मतलब है 5. दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विथ एक्स्ट्रा 5 चॉकलेट्स. तो वो एक्स्ट्रा 5 चॉकलेट्स का करोगे क्या, विल यू गिव इट टू 1 पर्सन? नो, यू विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड ये +1 हो गया. अंडरस्टूड? जस्ट गिव मी अ सेकंड. So this is a real life example of this particular context, net surplus or deficit. Let us look at it in another way. Suppose
I'll say there are 40 students in a class and unka average marks is 50, and I'll say 10 new students joined the class whose average marks is, let us say, 60. So find the new average of the class. Find the new average of the class. तो इसको मैं 2-3 मेथड में सोच सकता हूँ. पहले मेथड 1, average is equal to total marks by total students. So total marks will be how much? पहले 40 into 50, because 40 students will have 50 marks, so total marks is 40 into 50, plus 10 students will have 60 marks, so total marks is 10 into 60, divided by total number of students, 40 plus 10. So we get the average as, this is 22,000 plus 600 divided by 50, so we get 52. This is the average. This is method 1, and here ये जो हमने calculate यहाँ पे किया, this is termed as weighted average. इसको weighted average बोलते हैं. मैं weighted average को ऐसे लिख सकता हूँ, WA is W1A1 plus W2A2 by W1 plus W2. No need to mug up the formula, just try and understand. वही हो रहा है, total marks by total number of students. उतना ही कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. तो यहाँ पे W1 W2 ये weights बोलते हैं. तो यहाँ पे वो weights है number of students, and average तो दो अलग अलग average. तो when you have two different averages, तो average का जो basis पे calculation हुआ होता है, that is called as your weight. तो यहाँ पे जो average मैं calculate कर रहा हूँ students का, तो किस basis पे, number of students पे, जो that is a number of students is my weight. Okay, so W1A1 plus W2A2 by W1 plus W2, and ये सीधा सीधा जो method 1 था, total marks by total number of students, उसको use करके निकाला. I can solve this by yet another method, surplus deficit technique. Now you will see how useful this method is, because how you visualize average, that matters. Now if I say 40 students have got an average of 50, that means I can assume everyone has got a 50. मुझे पता नहीं सबका 50 आया नहीं आया, बट इतना तो मैं assume करूंगा तो भी ओवरऑल इफेक्ट सेम आएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज. तो तुम assume करो कि सबका मार्क्स है 50. हाउ मेनी टाइम्स? 40 टाइम्स. Now these 10 new students जो add हुए, because your class average is 50, so to maintain your class average, you will take 50 from those 10 new students. टेन न्यू स्टूडेंट्स है तो मैं उनसे 10 टोटल 10 टाइम्स 50 लिया. तो आई कैन से नाउ द क्लास एवरेज इज 50 फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 40 प्लस 10, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज है 50 अभी तक. बट जो नए लोग आए थे उनका तो एवरेज 50 था नहीं, उनके पास 60 था. तुमने उनसे कितना लिया है? 50. तो ईच ऑफ देम हैज एक्स्ट्रा 10. एंड में आई विल गेट अ नेट सरप्लस. नेट सरप्लस ऑफ हाउ मच? Each of them has got an extra 10 and it is 10 times. 10 of them. So total net surplus is 100. What do you do with the net surplus? You will divide the net surplus equally amongst all students. So कितने students है total? I have 50 students in total. I'll divide the net surplus equally among all 50 students. So each of them gets plus 2. So earlier I had given 50 to each of them, now 2. So 50 plus 2, the average becomes 52. This is another way of looking at it. We are doing the same thing, just looking at it in a different way. So when you calculated average using the first method, total marks by total number of students, when I'm going by surplus deficit technique, पहले मैं देख रहा हूँ 40 students, क्लास का एवरेज 50 है, मान लेते हैं सबका 50 है. अभी वो क्लास एवरेज मेंटेन करने के लिए इफ आई कीप एडिंग स्टूडेंट्स जो सब 50 मार्क्स उनका भी है, तो my class average won't change. So 10 new students, I took everyone with 50 marks. So now I have 50 students
and everyone has got 50 average. But those 10 new students had extra 10 with them. So total 10 of them have extra 100, and extra 100 का क्या करना है? You have to divide it equally. So each of them gets additional 2. So earlier you assigned them 50, now they get an additional 2. So average is 52. So this is another way of looking at it. Same question but दो context में देखें. There is a third method to look at this, and that third method is called as alligation. तो ये alligation समझने के लिए try and visualize tug of war. Now suppose, think of it in this way. Typical alligation question, let me put it, has 5 parts. Average 1, average 2, W1, W2 and weighted average. 5 parts. And question में any 4 parts would be given. Find the remaining part. That is the typical design of alligation question. Find the remaining part. Okay. So what matters like in the understanding of alligation is to carefully place the value. Solving एकदम आसान है. I'll show you how. तो ये particular example का मैं देखता हूँ यहाँ पे. Now try and think of it in the tug of war का context. तो ये जो point है, let us think of it as a variable point, जो कि या तो राइट को जा सकता है नहीं तो लेफ्ट को जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये दोनों साइड कैसे खींचते हैं. ठीक है. तो वन थिंग आई कैन कंक्लूड हियर दैट अगर ये पॉइंट इसी में ही फ्लक्चुएट करेगा तो आई कैन राइट माय वेटेड एवरेज हैज टू बी बिटवीन बोथ द एवरेजेस. हमारा जो ओवरऑल एवरेज है वो दोनों एवरेज के बीच में आएगा. इट कैन नॉट बी लेस देन A1 और ग्रेटर देन A2. चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. इट हैज टू बी लेस देन A1 एंड ग्रेटर देन A1 एंड लेस देन A2. तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में इफ आई पुट इट, वी हैड 40 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज इज 50 और एक साइड में 10 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज इज 60. So I'll put it in alligation in this way. On one side I have average is equal to 50 and on the other side I have average as 60. Now this point overall average will fluctuate between 50 and 60. It can be anything between 50 and 60. But 50 के नीचे नहीं हो सकता no matter how many people you take, and 60 के ऊपर जा नहीं सकता. Now just think about this. Let me take this as distance D1 and let this be distance D2. ये जो point है इसका gap from this point, let us say this is point A and this is point B. So this gap is distance D1 and this gap is distance D2. Tug of war जो game है उसके जैसा सोचो. Suppose for an example, I'll take 1000 people on this side and only 10 people on this side. All of them have equal strength. So which side will win? Tug of war game अगर हो रहा है, एक साइड में मैं 1000 people and on the other side only 10 people. So 1000 people वाला साइड स्ट्रांग होगा. तो ये जो पॉइंट है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट किया, बिकॉज दिस वाज हायर, ये पॉइंट जब लेफ्ट शिफ्ट होगा D1 D2 में D1 कॉम्प्रेस हो जाएगा तो D1 विल कम डाउन whereas D2 विल गो अप. ये समझ रहे हो सब? D1 विल कम डाउन एंड D2 विल गो अप. ट्राई एंड विजुअलाइज दिस. ये जो पॉइंट है ये अगर लेफ्ट को शिफ्ट होगा तो D2 विल इंक्रीज. तो अगर ये बढ़ रहा है दिस अफेक्ट्स दिस डायरेक्टली. सिमिलरली और एक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ऐसे लेंगे दैट हियर देयर आर 500 पीपल बट हियर देयर आर ओनली 50 पीपल, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर. तो ये बढ़ रहा है तो वो D1 को बढ़ाएगा. तो दिस विल अफेक्ट D1. उतना ही है. दैट मीन्स आई कैन से दिस गैप is affected by W2 whereas this gap is affected by W1. तो क्योंकि ये W1 is to W2 है, this will be W2 is to W1. इतना ही है alligation समझने के लिए.
बट वो ऑल्टरनेट क्यों होता है? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट टू अंडरस्टैंड. W1 D2 के ऊपर डिपेंड करता है, D2 D1 W2 के ऊपर डिपेंड करता है. Because if I'm increasing number of students on this side, it is going to increase D2, and if I'm increasing number of students on this side, it is going to increase D1. बस उतना ही है कॉन्सेप्ट एलिगेशन का. एक बार ये समझ गए तो आराम से we can solve every question that is needed. And typical allegation question, I said, has 5 parts, and out of 5 parts in any question 4 parts will be given. We'll have to find the missing part. That is how questions are normally designed in case of allegation. ठीक है, तो इसको ये एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. So for this particular question, average is 50 for how many students? 40 students. And the average is 60 for how many students? 10 students. तो ये रेशियो कितना आ गया? W1 is to W2, 40 is to 10 और 4 is to 1. तो ये अभी 1 is to 4 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 4 is to 1. ये इंटरचेंज होके दिस रेशियो इज 1 is to 4. नाउ दिस 1 is to 4, ये 1 पार्ट एंड ये 4 पार्ट, टोटल मेरा हो जाता है 5 पार्ट्स. एंड 5 पार्ट्स इज द गैप बिटवीन 50 एंड 60, which is 10. If 5 parts is 10, so 1 part I get it as 2. And if 1 part is 2, 50 से 2 आगे आऊंगा तो कहाँ पे पहुंचूंगा? Hence overall average is 50 plus 2, I get 52. This point will be 52. तुम या तो 50 से 2 आगे आ सकते हो, नहीं तो 60 से -8 कर सकते हो, 4 parts पीछे. 1 part is 2, तो 4 parts will be 8, तो 60 से 4 parts पीछे भी जा सकते हो. So this is the third method. So same question, we did it in 3 ways. The first way was this, that weighted average, total marks by total number of students. The second method was surplus deficit technique, and this is the third method, allegation. Allegation को all of you try and visualize in the form of this tug of war का game, तो तब easy होगा. ये point is a fluctuating point. Books में you can find a different diagram. I am doing it in this way deliberately because this will take lesser calculation and your ability to visualize will go up. तो इसको टग ऑफ वॉर के जैसा विजुअलाइज करो. Hope this is clear, everyone. Let's take a question. फिर ज्यादा क्लियर होगा. Let us see this one. Average age of 24 students and the principal is 15 years. When the principal's age is excluded, the average age decreases by 1 year. So what is the average age of the principal? So I'll take let age of principal. Let age of the principal be P and age of all 24 students, let it be S. So when principal is not taken, excluded, so 24 students का average कितना होगा? Sum is S divided by 24. The average is basically 14, क्योंकि पहले 15 था जब principal को ले रहे थे. If you exclude the principal, average decreases by 1 year, तो हो गया 14. So this gives you S is equal to 24 into 14. तो तुम multiply कर सकते हो. 14 4 the 56 carry 5, 14 2 the 28 5 30 336. Let this be equation 1. And when you are including the principal, so S plus P divided by, now 25 people हो गया, so the average is 15. So S तो है 336 plus principal का age is P, 25 into 15, 5 carry 7, तो 375 आ जाता है. So this gives me P as 375 minus 336, so 39 years. ये नॉर्मल प्रोसेस है सॉल्व करने का. तो बहुत से लोग ऐसे करेंगे, बट नेसेसरी नहीं है. यू हैव टू डू इट इन दिस वे. अ लॉट ऑफ पीपल विल डू इट दिस वे. बट मेथड 1, लेट मी टेक यू टू मेथड 2, एलिगेशन. इसको अगर तुम एलिगेशन में करोगे, तो व्हेन आई हैव 24 स्टूडेंट्स, तो उनका एवरेज है 14. एंड जैसे ही तुम प्रिंसिपल एक ही है, तो ओवरऑल एवरेज इज 15. तो प्रिंसिपल का एज कितना है, यही पूछा है क्वेश्चन में. ट्राई एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. क्वेश्चन को तुम डिकोड करके हाउ डू यू पुट इट इन एलिगेशन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओवरऑल एवरेज व्हेन आई एम टेकिंग स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल, तो ओवरऑल एवरेज इज 15, तो वो रहा बीच में.
ओनली स्टूडेंट्स का एवरेज इज 14 बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग बाय 1। प्रिंसिपल का कितना होगा एवरेज, मतलब आदमी एक ही है तो एवरेज लो या उसका वेट लो, बात तो सेम है। तो दिस इज 24:1, तो ये इंटरचेंज होके ये बन जाएगा 1:24, ये 1 पार्ट एंड 24 पार्ट। हियर 1 पार्ट जो गैप है इट करेस्पॉन्ड्स टू 1, क्योंकि 14-15 में गैप इज 1, तो 24 पार्ट्स विल करेस्पॉन्ड टू 24, तो 15 plus 24 you get the average as 39। you can solve it in this way also, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं, नथिंग। तो एलिगेशन में कैलकुलेशन इज मिनिमल, but what is challenging is understanding the context and to be able to know that okay यहाँ पे एलिगेशन यूज होगा। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया, तो इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, बट एलिगेशन नो कैलकुलेशन, सिंपल। इंटरचेंज कर लिया, रेशियो 24:1 तो ऊपर 1:24, दैट्स इट, आराम से सॉल्व हो। एंड इफ यू गो टू द थर्ड मेथड, वो भी कभी कभार इतना तुम्हारा काम इजी कर देता है, नेट सरप्लस डेफिसिट टेक्निक। थिंक अबाउट दिस, लेट अस गो डू इट बैकवर्ड्स। 24 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज, मतलब कोई भी दो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जस्ट विल रीड द क्वेश्चन एंड आंसर विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर। कैसे? तो इफ देयर आर 24 स्टूडेंट्स एंड इनका एवरेज इज 14, as per the principle of average I can assume everyone has got a 14, तो सबका 14 14 14 14 14 how many times? 24 times। जैसे ही मैं प्रिंसिपल को इंक्लूड करता हूं टू मेंटेन माय एवरेज, मैं प्रिंसिपल से भी 14 लूंगा, करेक्ट? तो प्रिंसिपल से भी 14 लिया है, सो नाउ यू हैव 25 पीपल, सबका एवरेज है 14, बट प्रिंसिपल को इंक्लूड करते ही मेरा एवरेज इंक्रीजेस टू 15, दैट मीन्स एवरीवन गेट्स अ +1। हाउ मेनी पीपल गेट अ +1? टोटल 25 पीपल, तो प्रिंसिपल के पास सरप्लस होगा 25 आफ्टर टेकिंग 14 फ्रॉम हिम, तो टोटल प्रिंसिपल के पास हुआ कितना? 14 + 25 39। यू कैन सॉल्व इट इन दैट वे आल्सो। 3 ways to look at it, so that is why just don't stick to one method that हाँ ये तो पता है मैं क्यों इतना दिमाग खराब करूँ। इट्स नॉट अबाउट नोइंग द मेथड्स, तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ एवरेज। एग्जाम में कैट इज वन एग्जाम वेयर इट इज एप्लीकेशन बेस्ड द क्वेश्चन। So to understand the application, you will have to go a little deeper. That ये method ऐसा क्यों हो रहा है? What's the principle of average? How does it work? Simple interest, compound interest पढ़ रहा हो, what's the principle of like charging interest? Profit loss discount पढ़ रहे हो, logic क्या है? Rather than like indulging in so much of formula, first focus on logic. Formula तो चलो याद ही रख लोगे, बिना formula के भी कर लो। If you are logically strong, you don't need formula. बट कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग वी नीड फॉर्मूलाज, तो वो तो हम कवर करेंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फॉर लॉजिक। इफ योर लॉजिक इज स्ट्रॉन्ग, नोबडी कैन स्टॉप इट, नो मैटर हाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन इज, हाउ डिफरेंटली दे हैव फ्रेज्ड द वर्ड्स, you will not find it difficult because you have understood the concepts in the right manner. So always focus on that part. Okay. So hope this is clear. Let us go to the second one. Let's see this one. इसको कैसे solve करें? The mean temperature of Monday to Wednesday was 37 degrees centigrade. That means Monday plus Tuesday plus Wednesday. मीन का मतलब है एवरेज, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो 37 into 3 111, so let this be equation 1। and Tuesday to Thursday, so Tuesday plus Wednesday plus Thursday, the mean was 34, so 34 into 3 102, let this be equation 2। अब अगर मैं 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, so I basically get Monday minus Thursday is equal to 9। Also it is given the temperature on Thursday was 4/5 that of Monday. Monday minus Thursday is 4/5 of Monday. This is equal to 9. So 1/5 of Monday is equal to 9. That means Monday को मेरा temperature था 45. And if Monday is 45, what was the temperature on Thursday? अब तो आ ही जाएगा 4/5. So Thursday was 36 degrees. This is a simple question. यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है. Allegation and all. Simple सा question है. इसको आराम से solve कर सकते हैं.
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें किसी को डिफिकल्टी तो नहीं होना चाहिए। Let us see the next one. Amitesh can has a certain average for 9 innings. In the 10th inning, he scores 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. Let his average till 9 innings is equal to A. पहले उसका एवरेज A था टिल 9 innings। 10th इनिंग एक ही इनिंग है, उसमें उसने स्कोर किया 100 एंड उसका एवरेज ओवरऑल हो गया A+8। दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 10th इनिंग में वो स्कोर कर रहा है 100 एंड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 8 रन। So this gap is 8 and this gap is like 100 minus A+8, so 92 minus 8, sorry 92 minus A। तो ये जो दो रेशियो है 92 minus A is to 8 is basically 9:1, so I get 92 minus A is equal to 72 or I get A as 20। So the average till 9 innings was 20। to find his new average, तो न्यू एवरेज तो 8 इंक्रीज हो गया होगा, तो 20 plus 8, so the new average is 20। the previous average the 28, previous average was 20, new average is 28। देख रहे हो कितना इजीली, एलिगेशन इज अ टेक्निक, इसको हम नॉर्मल प्रोसेस में भी कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस में भी वी कैन सॉल्व दिस, बट इफ यू अप्लाई एलिगेशन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू सॉल्व। All right, let us see this. The average age of a family of 6 members is 22 years. If the age of, तो यहाँ पे 6 members है, average is 22, so this implies I can say that total age is like 132. If the youngest member be 7 years, यहाँ पे इसका youngest member let us say is Y is equal to 7 years. So what was the average age of the family at the birth of the youngest member? So when Y was 0, that is 7 years ago, तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स का भी एज 7 years पीछे चला जाएगा, तो कितना डेफिसिट क्रिएट होगा सोचो। अगर सब लोगों को तुम 7 पीछे जाओगे, मतलब everyone goes back by 7 years, each member is going back by 7 years, so there are 6 members, so 6 into 7 42 years, and sum जब ये youngest member was just born is 90, तो उस हिसाब से एवरेज आ जाएगा। तो व्हाट इज द एवरेज एट द बर्थ, जैसे यंगेस्ट मेंबर पैदा हुआ उसका 0 है, सम है 90 बट मेंबर्स आर 6, एवरेज इज 15। बहुत से लोग यहाँ पे इसको 18 ले लेते हैं बिकॉज दे थिंक नंबर ऑफ मेंबर्स इज 6। नो, जस्ट द यंगेस्ट मेंबर इज बॉर्न, तो मेंबर हो गए 6 बट द एज ऑफ दैट मेंबर इज 0, so that is 15। Okay, let's take a look at this one. The average of 8 persons in a committee is increased by 2 years when 2 men aged 35 and 45 are substituted। तो substituted का मतलब है number of members don't change, जितने members थे अभी भी उतने ही है, just 2 men की जगह 2 women substitute हुए हैं। तो ये जो 2 men थे इनका एज था 45 and 35, तो 45 plus 35 80 गया, तो you add 2 women। अब सोचो, just think of it in this way, I removed 2 men and I'll include 2 women, बट उनका भी अगर वेट वैसा ही है जैसे ये 2 men का था,
सम ऑफ वेट्स इज 80, तो व्हाई विल माई एवरेज चेंज? जितना मैंने निकाला था उतना सब्सटीट्यूट हो गया, व्हाई विल द एवरेज चेंज? नंबर ऑफ मेंबर्स सही है, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इज कांस्टेंट, बट उनका जो एज है वो तो अलग अलग है, और जितने एज के लोग तुम निकाले थे, इफ यू आर एग्जैक्टली सब्सटीट्यूटिंग दैट, देन योर एवरेज विल नॉट चेंज. But the moment you like substitute these two women, average increased by 2 years. So 8 people ka average 2 years. That means these two women come with a net surplus of how much? 8 into 2, 16. That means W1 plus W2. उनके पास 80 तो है एंड सरप्लस 16, तो 96. मीन्स उनका एवरेज कितना होगा? 96/2, 48. The average of the two women is 48. क्योंकि those two women, they will bring in the total age of the two men, along with that some surplus. Why surplus? Because average is increasing. They are giving the surplus to the entire group. So 2 given to the entire group of 8. Total surplus is 16. So 80 plus 16. वो दोनों women का age है 96. So this will be more clear to you if you have fundamentally understood the working principle of average. That is what matters the most. तुम उसका working principle समझे हो नहीं, क्योंकि वो अगर समझ गए हो, तुम्हारे लिए सॉल्व करना क्वेश्चंस एकदम इजी रहेगा. यू विल नेवर फाइंड इट डिफिकल्ट. यू विल गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. यू विल नेवर हैव एनी डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग द अप्रोच. इसका अप्रोच क्या होगा, उसका अप्रोच क्या होगा, एंड हाउ व्हाट वे आई शुड लाइक टैकल दिस क्वेश्चन. यू कैन टैकल वन क्वेश्चन इन मल्टीपल मेथड्स ऑल्सो. तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो 2023 प्रिपरेशन, उनके लिए दिस बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल दैट यू इन्वेस्ट सम टाइम इन एवरी चैप्टर. Don't be in a hurry to finish the syllabus. Rigidity to not adapt to new methods. I don't have a liking for this subject, so I'll not do that. Don't get into those kind of like unnecessary thought process. Just look at it in a simple way. I have a chapter to read. Anything that comes new, I'll be equally excited to learn. And after I have learned that, maybe there are a few things I'll be naturally good at. There will be a few things I'll find it a little bit challenging to approach or solve. But doesn't matter. Either ways, I'll put in equal efforts. तो तभी क्या होगा, बाय द एंड ऑफ योर सिलेबस यू विल हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन द क्वांट सेक्शन, इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इट डजंट मैटर. यू विल गेट अ स्कोर बिकॉज तुमने सारा चैप्टर समझा है. अब एक चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो वो तो सबके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, नोबडी कैन सॉल्व इट, तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. बट ओवरऑल इन द एग्जाम आई विल फाइंड इट वेरी इजी टू पिक 15 क्वेश्चन एंड सॉल्व आराम से 15 क्वेश्चन, एंड विच इज लाइक 99.99. 15 में जब पहुंच रहा हूँ, तुम 10 क्वेश्चंस करके आओ, 99 आ जाएगा. एंड विच इज वेरी मच डूएबल. द फैक्ट दैट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू इट, नॉट बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, दे हैव अप्रोच द एग्जाम इन अ रॉन्ग वे. एंड वो बहुत ही फंडामेंटल साउंड्स वेरी इजी, एंड एवरी टाइम वी कीप ऑन सेइंग दिस, बट समहाउ दीज मिस्टेक्स आर रिपीटेड. तो ट्राई एंड अवॉइड टू गेट इन दैट जोन दैट मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्वांट्स अच्छा नहीं है, अलजेब्रा करूंगा, ज्योमेट्री नहीं करूंगा. दीज काइंड ऑफ थॉट प्रोसेसेस कोई भी लाना नहीं चाहिए. दैट इज माय एडवाइस. All right. So this was the session on average and like allegation topic का. Coming session में we'll take up questions on mixtures and allegation. How is allegation applied in the context of mixtures? तो वो सेशन कल है, same time 4 p.m. So those of you like have joined right now, do like subscribe to the channel and wait for the upcoming session. I have attached a few more questions यहाँ पे, जैसे ये these are mixture questions, ठीक है, ये कल वाले सेशंस में एक क्वेश्चंस करेंगे, एंड दीज आर ऑल मिक्सचर ये का क्वेश्चंस है. So just to show you the context how to solve, and these are some questions जो profit loss discount and simple interest compound interest based है, तो how to apply allegation in this context. So we'll be taking up in the coming session tomorrow. Till then, keep solving, and if you are new to the channel, do subscribe to the Unacademy CAT-alyst channel. ये 0 to Zenith Batch just recently start हुआ है, CAT का January 5 में start हुआ था ये, and और एक perfect score batch for repeaters yesterday it got started. So you can join the batches by taking a subscription plus or an iconic subscription, and अभी 25% discount चल रहा है till 18th, ठीक है, 18th तक 25% discount चल रहा है, तो you can get a 25% discount.
एंड एक GDPI का भी बैच शुरू हुआ है फॉर CAT 2022 पीपल. Those of you have got calls, start preparing seriously and try your best to convert the calls. Depending on your requirements, plus या iconic subscription का features देखो, and whichever features you want, you can take a subscription accordingly. Both are extremely like helpful and very beneficial, worth the money. एंड ये अनअकैडमी का जो टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च प्राइस स्पेशल प्राइस 999 में है. 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अदर मैनेजमेंट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का 4 फुल लेंथ टेस्ट, 25 सेक्शनल टेस्ट एंड 25,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो वेरी गुड क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए हो गया, तो इसको यूज कर सकते हो. So that is it from my end for this session. Thank you all for joining. Hope you guys liked the session and enjoyed and got some insights on what average is. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा कुछ बहुत भी पढ़ाया नहीं, so that you get pressurized.